So hi students, myself Azim sir from KMS English Medium High School and Junior College. So here today we start with the chapter number 1 from chemistry, that is some basic concept of chemistry. So before starting with the chapter, I think the topic which is related to the chemistry we already studied in your 10th standard. In your 10th standard textbook, you discuss the chemistry, physics, bio and all. But in 11th, we will discuss chemistry as a separate subject. Okay, we will study a separate subject in chemistry. So here, the first chapter, we're going to start some basic concept of chemistry. So before starting with the chapter, we should know what are the topic which has been deleted and non-evaluative portion of the year 2020 from your textbook. So that is introduction, nature of chemistry, then matter, pure substance versus mixture, then state of matter, next law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, and last is a Dalton atomic theory. These are the topic which has not to be studied for the preparation of the paper or your exam. But in this, some of the topic we should know because that are the basic part which are used for the further. Okay. So in today's lecture, we discuss with the three important topic, that is introduction regarding the chemistry, what is matter, and next is the classification of matter. Here, what is mean by chemistry? First we should know हम chemistry subject से relate हैं, ऐसे chemistry subject पढ़ने वाले हैं तो हमको पता होना चाहिए chemistry है क्या. So chemistry is a branch of science which deals with the composition, structure and properties of matter and changes that matters undergo, or transformation of matter from one form to another form. So chemistry क्या है? It is a branch of science which deals with the composition. If I take a simple example here, water. Water has composition, that is hydrogen and oxygen. It has an angular structure. If I talk about the physical properties of water, so water is a liquid in state, it has a liquid state, and it is a colorless, it is a tasteless. So if I talk about the changes, water in the form of ice gets converted into liquid, liquid gets converted into the gas. Okay, so we mostly concerned with the composition, structure, properties and their transformation. Chemistry are classified into four: inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, physical chemistry, and one more is that is the biochemistry I have not mentioned here. Okay, so for example, I taken a in chemistry the branch of science which deals with the composition. For example, I taken a sodium chloride. Sodium chloride has a composition, has a molecular formula, so NaCl, sodium and chlorine. If we talk about the physical properties, it is a white crystalline powder, odorless and strong saline taste. Sodium chloride easily soluble in water but insoluble in alcohol. वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाता है, लेकिन इसको अगर हम अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा. अब ये सोडियम क्लोराइड बनता कैसे? हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? सो व्हेन KCl अंडरगो रिएक्शन विद मेटालिक सोडियम, हमने KCl का रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ किया 850 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? NaCl प्लस पोटेशियम. सो I taken a very simple example, that is sodium chloride, which show these physical properties and chemical properties. Next, very important, that is matter. As we know that matter is made up of small particles, and please remember that particles may be atom or molecule. So when small particles combine together, there is formation of matter. And what is matter? Matter which has mass and occupies some space. जितने भी मैटर होते हैं उसका क्या होता है? कुछ मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक ग्लास लूं, ग्लास में अगर मैं पानी फिल कर दूं, आई टेकन अ वाटर, तो वो वाटर क्या करेगा? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ग्लास का, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और उस वाटर का क्या होगा? कुछ मास होगा. So anything which occupies some space and has a mass is called as matter. These matter are of four types: solid, liquid and gas, and one more is a plasma. But mostly
we will discuss with the three important, that is थ्री फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम मोस्टली ये तीन फिजिकल स्टेट हम 11 और 12 में डिस्कस करेंगे, बिकॉज डिटेल्स में सॉलिड एक आपका 12 का एक चैप्टर है. फिर लिक्विड में हम सॉल्यूशन के बारे में 12 में डिस्कस करेंगे, और गैस हम 11th में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में हम 11th में डिस्कस करेंगे. ओके, सो these are the four types of or four state of matter: solid, liquid, gas and plasma. Now here different state of matter exhibit the following characteristics. So we know that solid have definite volume and definite shape. Okay, on the right hand side we can see the images. So solid, here in case of the solid has a fixed shape and fixed mass, because in case of solid द कॉन्स्टेंट पार्टिकल, जो पार्टिकल जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड के अंदर, वो काफी क्लोज होते हैं, और काफी क्लोज होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, और उसकी वजह से इनका जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, पार्टिकल क्या होते हैं, मूव नहीं होते, इसलिए सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते. और आई कैन से दैट कि मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है. लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, वी टॉक अबाउट द लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. अगर मैं कोई कंटेनर में अगर 10 ml ऑफ वाटर डालता हूँ, यस, तो 10 ml ऑफ वाटर इस कंटेनर में आ जाएगा, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है. लेकिन अगर मैं कंटेनर का शेप चेंज करूं, पहले मैंने स्क्वायर फॉर्म कंटेनर में लिक्विड को भरा, तो लिक्विड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, शेप कौन सा ऑक्यूपाई कर लिया, कंटेनर का. अगर मेरे पास सर्कुलर फॉर्म में कोई सर्कुलर कंटेनर है, सर्कुलर कंटेनर में मैंने लिक्विड डाला, 10 ml ऑफ वॉल्यूम वंस अगेन, तो क्या होगा, वो शेप कौन सा ऑक्यूपाई कर लेगा, सर्कुलर. सो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. दे take the shape of the container in which they are placed. If you talk about the gas do not have a definite volume, do not have a definite shape. ना इनका shape definite होता है, ना volume definite होता है. For example, अगर मैं कोई कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 10 ml की, वो कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी 10 ml है. लेकिन अगर उसके अंदर मैं 5 ml ऑफ गैस क्या करूंगा, पुल करूंगा, आई विल पोर 5 ml ऑफ गैस, तो 5 ml ऑफ गैस क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, और पूरा 10 ml क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी. सो गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, बिकॉज गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, और मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड ड्यू टू विच दे हैविंग अ हाई काइनेटिक एनर्जी. तो इसलिए गैस क्या होती है, इजिली स्प्रेड हो जाती है, और पूरा कंटेनर, पूरा वॉल्यूम क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी. So gas possesses a high kinetic energy. And please one more important point, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस के वॉल्यूम को मैं चेंज कर सकता हूँ बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस को मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, गैस के वॉल्यूम को कम कर सकता हूँ. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द solid and liquid cannot be compressed. Okay, so these three state of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ, सी हियर. सो व्हेन सॉलिड अंडरगो लिक्विड, अब मेरे पास यहाँ पे आइस है, ये आइस अगर हीट एब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. व्हेन सॉलिड गेट्स कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्यूजन. क्या कहते हैं, हम इसे फ्यूजन कहते हैं. एंड इस लिक्विड को मैं जब हीट करूंगा, मतलब वंस अगेन इट एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी, तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में. सो दिस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. सो सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्यूजन, लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस, दैट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. नाउ सो आई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में. लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा, आई हैविंग अ गैस है, अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा, उसकी वजह से गैस दोबारा क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा. तो इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. व्हेन गैस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. एंड व्हेन लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग. Once again I am decreasing the temperature of liquid. So while decreasing the temperature of the liquid gets converted into the solid, that is called as freezing. So here I already mentioned the point, on heating a solid usually changes to liquid, and the liquid on
further heating changes to the gases or vapor. In the reverse process, a gas on cooling liquefied to the liquid, and liquid on further cooling freeze to the solid. Okay, so hope you understood the basic parts of the matter. Now here, classification of matter. Matter are classified into two on the basis of physical separation, that is a matter and pure substance. So first we talk about the pure substance. A pure substance are of two types. Here the pure substance which cannot be broken down is called as element, and which can be broken down or can be decomposed is called as compound. So if I define what is element, so element is a substance which cannot be broken down into a simpler substance. एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे मैं कोई पार्टिकल है, कोई एटम है, एटम को मैं दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, इसी तरह एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट को मैं ब्रेक नहीं कर सकता, इसी तरह सोडियम एलिमेंट को, सोडियम एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू टू सोडियम. ओके, अ सिंगल एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते. बट इफ यू टॉक अबाउट द कंपाउंड, कंपाउंड कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन. जैसे एग्जांपल वाटर, H2O को मैं ब्रेक कर सकता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. सो कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, लेकिन हम एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते. इसी तरह मिक्सचर, mixture are of two types. One is a homogeneous mixture and second is a heterogeneous mixture. So we'll discuss in details here, please. Here यहाँ पे मैंने लिया elements और compound. जैसे element, what is element? It contain only one kind of atom. जैसे example helium एक atom है, एक element है, इसको मैं break नहीं कर सकता. हाँ, हम molecule की भी बात करते हैं. जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन molecule, ऑक्सीजन molecule कैसे बना है? It is made up of same types of atom, same types of atom or same types of element. जैसे oxygen molecule is made up of two oxygen. Okay, so this comes under element. But if we talk about the compound, compound contain two or more kind of atom. जैसे example यहाँ पे water. So here water is made up of two different atom or two different element, that is hydrogen and oxygen. तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक कर सकता हूं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक. ओके, सो हियर नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एक्सप्लेनेशन हियर. सो देयर आर मेनी सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड योर मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? जब दो टू और मोर सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. जैसे सॉल्ट एंड वाटर को मैंने मिक्स कर दिया, शुगर एंड सॉल्ट को मैंने मिक्स कर दिया, इट इज अ मिक्सचर. मिक्सचर are of two types. One is a homogeneous mixture and second is a heterogeneous mixture. अब homogeneous mixture क्या होता है? In homogeneous mixture it form a one phase. जैसे example आपने यहाँ पे देखो, on the right hand side I taken a figure here. Suppose इस container के अंदर, in this container or is in this beaker, it contains salt and water. So while adding a salt into the water, it form a single phase. आपको एक फेस नजर आएगा, तो इसको हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर. जब भी हम टू और मोर मिक्सचर को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अगर आपको सिंगल फेस मिलता है, so that single phase is called as homogeneous mixture. Next one is a heterogeneous mixture. अब heterogeneous mixture क्या होता है? While adding a two component, it form a more than one phase is called as heterogeneous mixture. तो जैसे एग्जांपल मैंने ऑयल और वाटर को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया. अब ऑयल और वाटर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो गए, तो वी गेट वन वाटर लेवल एंड सेकेंड इज अ ऑयल लेवल. ओके, सो हियर वी गेटिंग अ टू फेज, one is a oil phase and second is a water phase. So more than two phase comes under a heterogeneous mixture. Okay, hope you understood. These are the some basic concept I think we already studied. Thank you for listening the lecture. So hope we will see some more basic part of the chemistry in the next video lecture. Thank you.